हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओपन सीवी ट्यूटोरियल में आज हम देखेंगे कि शेप को हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं और या उनके ऊपर हम टेक्स्ट किस तरह पुट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पाइथन ओपन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइन ड्रॉ करके देता हूँ कि आप लाइन को किस तरह ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट import cv2 as cv, then import numpy as np. Now let me create here a black image. Np dot zeros with 500 and 500. Width and height मैंने सेम रखा और लेट्स से चैनल भी हम 3 रखते हैं और इसकी डी टाइप रखते हैं अनएंट एट। ओके, नाउ cv dot line. आप जब लाइन ड्रा करते हो तो यहाँ पे लाइन लगाते हो। नाउ दिस लाइन टेक कपल ऑफ आर्गुमेंट्स, बट बिफोर दैट लेट मी यूज हियर cv दैट वेट की, क्योंकि हमने कीबोर्ड से अपने विंडो को भी बाइंड करना है, या दूसरे अल्फाज में कि अगर आपने कीबोर्ड पे कोई की प्रेस, जब तक कोई की प्रेस नहीं करते तब तक विंडो स्टे रहे। सो दिस लाइन फर्स्ट टेक द इमेज ऑन विच यू वांट टू draw the black line. Before that let me show you the black image. Okay, so cv dot not cv dot, yeah, cv dot I am show image and this black one. So if I click right, so ये हमारा black image है। Now I want to here draw a line, so I'll simply use here just before that. Okay, before that cv dot line on top of black, and the position will be let's say 0 0. This is the x and y coordinate and I'll explain a bit later. उसके बाद startup and ending position, and let me explain you कि आप किस तरह एक शेप ड्रॉ कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेंट को ओपन करता हूँ। पेंट, this is our paint. Let me make it bigger. Let me take here a pen. Yeah, हमारा ये इमेज था 500 width and 500 height. What we want to draw a line. जो मैंने 0 वहाँ पे स्पेसिफाई किया, this is your x coordinate and y coordinate. Okay, so I want to start my line from this position. The next thing that I am going to do will be, this is your starting position of line and ending position. So now this time I'll mention this, let's say 100 and 100. The third one will be the thickness of line or the color of line. So let's say 25500, and the third one will be thickness. So if I just run it, as you can see, this is our line starter position, but you can increase this to 400, as you can see, and you can change the y if you want. अगर आप इसको थोड़ा आगे किस करना चाहते हो तो आप x को चेंज कर सकते हो, like 100, और आप x को भी चेंज कर सकते हो, let's say 100, so that it could be straight. अब अगर आप इसको इस साइड पे ले जाना चाहते हो, then you have to increase this one like 150. Yeah, and you can also make changes right here 150 to 500, और ये हम थोड़ा कम करते हैं, बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। So 150 could be better. Yeah, it's perfect. So इसी तरह आप इसके साथ खेल सकते हो। Now the next thing that we will be doing, we will be drawing a rectangle. So I'll be using the same image. Okay, let me zoom in a bit. For that, what you have to do, cv dot rectangle. Now this rectangle, take the same image on which you want to draw this rectangle. The second thing, the x and y coordinate, let's say 10 by 10. First let me show you right here. So this is our image, and I want to draw like this rectangle within this image. So if specify you 10 and 10, this is the x and y position. Okay, y and x position.
so it could be like here, okay, it would be right here. अगर आप इसको इंक्रीज करते हो तो ये सेंटर में भी आ सकता है। अब नेक्स्ट थिंग जो हम स्पेसिफाई करते हैं कि इसकी जो सेंटर जो रेडियस है, मतलब जो लेफ्ट बॉटम लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर है वो स्पेसिफाई करते हैं। सो लेट्स से 100 and 100. The third thing that you would specify is the color 255. This time change the color 0 0 255, और आप इसकी थिकनेस भी रख सकते हो, इसकी फील भी रख सकते हो। थिकनेस मैंने रखा 3, फील मतलब कलर जो हम फील करते हैं इसमें, and we have to display it. So cv.im show image or not rectangle black. Let's run it. As you can see, we have this rectangle. Now if I change the position, let's say 150 and 150, तो ये थोड़ा सा आगे होगा as you can see। और अगर आप इसको चेंज करते हो, लेट्स से 100 to 200, then it quite as you can see, आप और भी इसके साथ कर सकते हो like 300 as you can see। तो हमने y एक्सिस में इसका रेडियस 300 रखा, and you can also this one, this should be 250, yeah। So ये था rectangle. Now we'll be drawing circle. Okay, so let me zoom in. So circle के लिए भी आप सेम कर सकते हो, cv.circle circle, और पहले आपको इमेज देना पड़ता है। Next you have to specify the position. Let's say 150 में इसको थोड़ा सा सेंटर में रखना चाहता हूँ। Anyways ये सेंटर में नहीं होगा, but still it's okay. The third one you have to specify रेडियस। सो मैं 30 रखता हूँ। सो लेट मी शो यू, सर्कल आपका इस तरह दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप इमेज के अंदर सर्कल ड्रा करना चाहते हो तो सर्कल इस तरह होगा। सो हमने इसकी एक्स एंड वाई पोजीशन 150 रखा, तो सो भी हम कंसिडर करते हैं कि शेप यहाँ पे ड्रा होगा। अब जो मैंने 30 रेडियस यहाँ पे लिखा, इसका मतलब है कि इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 30 होगा। जितना कम होगा उतना छोटा सा सर्कल होगा। सो 30 के बाद मैं कलर स्पेसिफाई करता हूँ। दिस टाइम लेट्स से ग्रीन 1 2550, एंड यू कैन आल्सो स्पेसिफाई द फिल कलर। Again we have to display it, cv.im show image अपना circle, not circle, as you can see। Now if I increase the radius, as you can see, let's say 100, then our circle will be quite bigger, okay, as you can see। और आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। The last thing I'll show you that how you can put text on image, okay। So इसके लिए आपको लिखना पड़ता है cv.put text, और सबसे पहले किस इमेज के ऊपर आपने टेक्स्ट ड्रॉ करना है, उसके बाद आप क्या चीज लिखना चाहते हो। So let's say hello guys, okay। The third one will be the position of your text। So let's say I want to write here hello guys। So you have to specify x and y for position of this text। अगर आप इसको यहाँ पे रखना चाहते हो तभी आप यहाँ पे पोजीशन दे सकते हो। So let's say 100 and 100 देते हैं x and y कोऑर्डिनेट से। The third one will be color। color let's say 055 to 55 white रखते हैं, ठीक है। और इसका थिकनेस आप रख सकते हो like 3। just let me show you, and I forgot one thing, वो ये है कि आपको स्टाइल भी देना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप दे सकते हो font cv.font underscore, उसके बाद आप लिख सकते हो hershey। now these are built in, okay, you don't need to worry about it। प्लेन, यहाँ पे बहुत सारे बिल्ट इन आपको मिल सकते हैं लाइक फॉन्ट hershey complex, font hershey simplex, plain, etc। and there is one error, I think still we have an error, this one, okay, we have to
remove it. I can specify here the size before the color. अच्छा यहाँ पे ऑर्डर भी सम टाइम मैटर करता है. ओके वी हैव टू डिस्प्ले इट अगेन. सो ऑर्डर आपको देना पड़ेगा. आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो इसकी. तो cv2.im तो इमेज ब्लैक. या हेलो गाइस, लेकिन मैं इसकी थिकनेस यानी इसकी साइज, दिस इज साइज नॉट थिकनेस. लेट्स से आई एम गोइंग टू यूज इट 5. yeah it's working. let's say 2 और थिकनेस यहाँ पे 3 रखते हैं. एंड आई डोंट नो कि ये थिकनेस हमें एरर क्यों दे रहा है, बट दिस टाइम इट्स वर्किंग. सो ऑर्डर मैटर्स. आपको इस ऑर्डर में ये सारे के सारे पैरामीटर पास करने पड़ते हैं. आइदर यू आर वर्किंग ऑन सर्कल, रेक्टेंगल, व्हाटएवर यू आर वर्किंग ऑन. सो या दैट वाज द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.